हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 23 स्टोरी राइटिंग। इसमें हम बात करेंगे कि हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, कुछ लाइंस दी हैं, मुझसे पूरी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट द स्टोरी राइटिंग स्किल। सो मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो देखिए एंड तक, और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही मैंने अपने पूरे इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 के सारे लेसन्स मैंने यहाँ पे वीडियोस में डाले हैं। मेक श्योर आप उन सबको चेकआउट करें और आप सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फुल एजुकेशन पहुंचाना मेरा मोटिव है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। तो हम शुरू करते हैं। हमको मिली है कुछ आउटलाइन स्टोरी की, लाइक ए फॉक्स hungry, a crow on a tree, a piece of bread, weak fox wanted, a plan said to the crow. Sweet voice, sing a song, crow, glad. Opened mouth, sing, bread fell down, fox picked it, hear your song tomorrow. अब हमको ये एक आउटलाइन मिली, अब इसको हमको ज्वाइन करके पूरी अच्छी स्टोरी बतानी है। देखिए इसको स्टोरी कैसे हो सकती है। We had this outline. We can write a full length story like this, that once a fox was hungry. Fox hungry थी, ठीक है, यहाँ पे he went out in search of food. We added one line out of our own. So वो गई search food किया, okay. He reached a garden. A crow was sitting on a tree. Crow on tree है, तो अब हमने उसको garden तक पहुंचाया, तब तो crow tree पे मिलेगा. The crow had a piece of bread. The fox wanted to get it. He hit upon a plan. उसने एक plan सोचा. He said to crow, "You are a fine bird. Your voice is very very sweet. I like your songs. Please sing me a song." You see, we use the outline as a step process. We just come to the sing a song. The crow was glad at its praise. Crow got glad, okay. It opened its mouth to sing. Opened mouth to sing. It cried, caw, caw. We just added the things that how he might have sing it, okay. The piece of bread fell down. The fox picked it up and ate it. He said to crow, "Thank you very much. I shall hear your song tomorrow." हमारी पूरी कहानी हो गई। From the first word to the last word of the outline, we used it very well to make this big story. Okay? आपको समझ आया कि कैसे यूज किया है, कैसे लिख सकते हो। Again we have an outline. Read it. आप कर सकते हो, इससे एक स्टोरी बना सकते हो। देखो कैसे बनी इससे भी स्टोरी। We have this outline. Now read this story to understand कि कहाँ पे हमने आउटलाइन लिया, कहाँ पे कैसे हमने उसको जोड़ा, कुछ अपनी ओर से एक दो सेंटेंसेस और ऐड किए, एंड वी गॉट अ कंप्लीट बिग स्टोरी। Do you find it interesting and helpful of writing your own story out from just a few outlines? So now we have another outline and the story out of it. Okay? So here we have a full exercise of having two stories. Here are different small outline are given over here. So I'm written a first story like this. From this much outline I have just written this big story, and the next one you can try it out at your own. Read these two outlines and read this story to see how we just added a few words, a few sentences more, and just make this much outline as a this big story. आप अपने उसको लिंक करने के लिए कुछ कुछ लाइन्स आप कभी भी ऐड कर सकते हो। जैसे आई यूज कुछ वर्ड्स, सपोज अ फॉक्स वाज हंग्री, आई जस्ट यूज वंस अ फॉक्स वाज हंग्री, सो ही रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड बट ऑल ऑफ नो मीन, उसको कुछ नहीं मिला। Soon he entered a fruit garden. He was happy to see trees fully loaded with delicious looking fresh fruits. He saw a bunch of juicy grapes high above the ground.
अब bunch of juicy grapes हम देख सकते हैं ना पिक्चर में भी कि हाई है, तो मैंने बस वो ऐड कर दिया, ठीक है. He wished to eat those shiny juicy bunch of grapes. कुछ adjectives ऐड कर दिए. He shouted in excitement and reached over there. अब वो वहाँ पहुंची. As they were hanging too high from the ground, Fox started jumping to reach to the height, but failed each time. He jumped and more high than earlier, but was of no use. So at last he was tired and gave up on them. He said to himself, the grapes were sour. Clear? हमने sour इसका लास्ट में जो है इसकी वजह से हमने इसका नाम भी दिया स्टोरी का, sour grapes. क्लियर है कैसे कर सकते हो. आप भी अब ट्राई करो, आप भी कर सकोगे. आई होप यू गॉट इट राइट and find it useful. Please do like, share and subscribe to my channel.